मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो। Yes, sir. अब बीच में बंद हो गई थी, Yes, sir. अब आ रही है? Yes, sir. चलो कंटिन्यू। ओके, Yes, sir. एक्चुअली तुम Yes, बाद sir. में थोड़ा ज्वाइन करते हो ना, इसमें थोड़ा ये ओवरलोड हो जाता है इसको। ओके, सो लेट मी कंटिन्यू। मैंने कहा था हमने अभी कुछ एक्चुअली एक्स्ट्रा किया नहीं। हमने कन्वर्जेंस में ये लिमिट का आइडिया यूज किया था, और यही लिमिट का आइडिया हमने कंटिन्यूटी के लिए किया था एक फंक्शन की। तो पिछले जो थ्योरम था या पिछली बार जो हमने किया था, हमने दोनों को कनेक्ट किया था। हमने कहा f is continuous at a point, say x naught, if and only if this is equivalent, this is the same thing as saying कि xn जब भी x naught को कन्वर्ज करेगा, यानी ऐसे लिखूं कि x naught अगर x naught को कन्वर्ज करेगा, it automatically makes gives us f of xn converges to f of x. ये कंटिन्यूटी है, दिस इज अबाउट सीक्वेंसेस, दिस इज अबाउट कंटिन्यूटी। हम कंटिन्यूटी को इन टर्म्स ऑफ सीक्वेंसेस लिख सकते हैं, दे आर द सेम थिंग। नॉट ऑफ कोर्स कन्वर्जेंस इज समथिंग, कंटिन्यूटी इज समथिंग एल्स। कंटिन्यूटी के लिए फंक्शन चाहिए, इसके लिए एक सीक्वेंस चाहिए, राइट? तो यहाँ पे बेसिकली हम उन दोनों को आपस में कनेक्ट किया हमने प्रीवियस थ्योरम। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट चीज में वो ये कि अगर हमारे पास कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल, राइट? सो लेट मी राइट डाउन इट एज अ थ्योरम कि इफ अ फंक्शन is continuous on a closed bounded interval, continuous in a closed bounded interval, closed bounded interval, जिसको हम कहेंगे AB, then it is bounded there. तो कहने का मतलब ये आगे करूंगा कि अगर तुम्हारे पास कोई फंक्शन है जिसकी डोमेन है क्लोज्ड बाउंडेड इंटरवल, राइट? जब मैं कह रहा हूँ कंटिन्यूअस इन दिस इंटरवल मींस इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी x, यानी f इज कंटिन्यूअस ऑन ए बी, implies that हमारा मतलब ये है f is continuous at every point of the interval। और हमें पता है कि जो ये आउटसाइड जो बाउंड्री पॉइंट है उसके लिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पे लेफ्ट कंटिन्यूअस है, यहाँ पे राइट कंटिन्यूअस है। एंड पॉइंट्स, इंटरनल पॉइंट्स में तो बोथ वेज कंटिन्यूअस है, लेकिन एंड पॉइंट्स पे हम कह रहे हैं दाएं और बाएं से कंटिन्यूअस है। सो अगर ये हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है ऑन दिस क्लोज्ड इंटरवल, देन इट इज बाउंडेड, यानी देन there exists some m positive such that modulus of fx जो है it is less than or equal to n for all x belonging to AB। तो ये हम दिखाना चाहते हैं कि it is bounded, यानी it's bounded above as well as bounded below। मतलब इसका मतलब यही होता है। Anyways, proof. Now let f from A to B to R be continuous on this closed interval। ऐसे वैसे continuous का मतलब ही है, जब मैं कह रहा हूँ continuous and giving the domain, it means I'm saying it is continuous at every point of the domain। Assume, अब हमें क्या दिखाना है? Now assume to the contrary, it's not bounded। Assume to the contrary, f is not bounded। So it implies that, say f is not bounded above, say f is not bounded above। So that इसका मतलब क्या है? So that for every positive integer n belonging to set of natural numbers, there exists some xn
belonging to the closed boundary interval such that f of xn is bigger than n. इसको मैं ऐसे बताना चाह रहा हूँ कि f of x is not bounded. उसका मतलब take any number, take any number m, it cannot be an upper bound of f. That means there would exist some f of x which is bigger than m. मैंने बोला कोई भी नंबर ले लो, तो चलो अगर मैं 1 लूं, I can find an f of x which is bigger than 1. अगर मैं 2 लेता हूं, I can find an upper bound that is, there exists some x belonging to AB such that f of x is greater than 1, such that f of x is greater than 2. Any number के लिए कोई ना कोई x मिलेगा, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वो बाउंडेड हो जाएगी. तो इस नंबर का मैंने जो for which the function is bigger than 1, इसका मैंने नाम दिया x1, इसका मैंने नाम दिया x2, इसका मैंने नाम दिया x3. So in general, I can find an xn such that f of xn is bigger than n. Now, इससे तो एक sequence generate हो गई. So then I have actually found a sequence. So now we have found a sequence. In its domain, I have found a sequence xn, n runs from 1 to infinity. That is contained in this closed interval AB, right? Which implies that this sequence to hai, it is bounded because it cannot be bigger than B and it cannot be less than A. So therefore this sequence, now which implies that this xn is a bounded sequence of real numbers. Bolzano-Weierstrass theorem कहता है, whenever you have a bounded sequence of real numbers, it must have at least one limit point. So therefore, by Bolzano-Weierstrass theorem, ये जो हमें sequence मिली, xn, n runs from 1 to infinity, must have at least one limit point, say zeta, right? And since zeta is closed, since the set AB is closed set contains all its limit points. This zeta must belong to my AB, right? अब हमने एक और चीज की है. Now, since L is a limit point, ये हमने last time किया था, of a sequence xn and runs from 1 to infinity, so there must exist a subsequence which converges to L. So therefore, there exists a subsequence, इसका एक subset which preserves the order xnk, k runs from 1 to infinity, of xn, n runs from 1 to infinity, such that what? F of xnk, make it wrong, such that this xnk converges to this L as k approaches infinity. So, but हमें पता है ये जो ये सीक्वेंस है, ये जिस तरह से हमने बनाई, इसकी प्रॉपर्टी है कि fxn is greater than n. So therefore हमें मिलना चाहिए कि f of xn k is greater than nk for all k running from 1 to up to जो ना भी infinity. So I've got a sequence that converges to L and f of x and k which is bigger than k for all a, मतलब हर किसी भी a sequence of natural numbers से बड़ा है, it's becoming larger and larger and larger as k goes to infinity. It implies that
f of x and k would go to infinity, although uh, what? although ये जो x and k है ये converge करती है l को as k approaches infinity. So I have found a sequence which, although it converges, so we have limit x k approaches infinity, f of x and k uh, cannot be equal to f of l, although limit k approaches infinity, x n sub k is equal to f, which is a contradiction because f is continuous. अगर ये sequence इसको converge करेगी, इसकी जो range sequence है under f, that should converge to fl. So therefore, which is a contradiction because f is continuous. No, I should write f of zeta, है ना? f of l, मैंने कौन सा नाम दिया था? लिमिट पॉइंट का नाम? ओ मैंने यहाँ zeta लिया था, तो मैं जरा नाम मैं भूल गया. zeta ठीक है, यहाँ l की जगह zeta लिखना है. वही मैं सोच रहा हूँ ना, ये क्या हो गया? Anyway, which is a contradiction since f is continuous. As at zeta, as because zeta belongs to AB, and by our substitution, it is continuous at every point of this interval. So this contradiction proves we will get a similar contradiction if f of x is not bounded below. Hence, f must be bounded in this domain.